Hey Isaac, this is Zoha Abdullah from AIESEC in Lahore, and today we have a very special guest with us, Mohammad Daniyal, who has been the SCVP FNL for AIESEC in Lahore for the term 2021. How are you, Daniyal? Hello, Zoha. I'm good. Thank you so much for having me. Okay, so Daniel, we have some really amazing questions packed up for you. So let's begin. Okay. Sure, sure. So, tell us, Daniel, how had the early life been like for you, and which institute did you choose for your degree, and what was your major? Just we want to have a brief introduction for you from you, and then we will move forward. Okay, so starting off from the very beginning, I switched a couple of schools, but at the end, I did my O levels and A levels from the same school, which was Bloomfield Hall. काफी लोगों ने नाम नहीं सुना होता, but again, I would love to tell everyone that it was an amazing institution back then, till the time I was there. After A levels, I had a couple of options. Which one of them was TILS, which is Institute for Law. Then I had an option for UCL, which is University College of Lahore. But at the end, NUST bhi tha or FCC bhi tha. But again, I just applied in LSC. In the very beginning, I never had any sort of, I would say, थॉट कि मैं डिग्री कौन सी करूंगा आई वाज लाइक जस्ट गो विद द फ्लो देखते हैं कि वहां जाके क्या होता है एक तो पहले पूरा आपका कंडीशनल एक्सेप्टेंस होती है कि ए लेवल्स का रिजल्ट आएगा तो फिर देखेंगे खैर आई अप्लाइड फॉर एलएससी कंडीशनल एक्सेप्टेंस आ गई और उसके बाद क्या कहते हैं ए लेवल्स के रिजल्ट के बाद आई गॉट इनटू एलएससी first year was a little, I would say, I was more into extracurricular, and that was the time when I also joined AIESEC. Not exactly in first year, by the end of first year and the start of second year. So yeah, that's or second year me again because I was never a proper or a nerd person or good at academics. So my CGPA wasn't that good to get into a degree of my own choice. So I had to accept what LSE had for me. So I did bachelor's in political science and media studies. Okay, perfect. So, what made you join Isaac? Was it a random sign up, or did you know exactly what you were signing up for? Okay, so that's a little bit of a story for me. So there was this one senior of mine. We were working together in uh, photography society in LSC. He once told me that there's this organization AIESEC. They would really appreciate your work and everything. So why not you sign up for it? मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है. आई नेवर इवन बॉदर टू गूगल एनीथिंग. एक दिन रैंडमली ये कहते हैं समर वेकेशंस में जब समर सेमेस्टर चल रहा होता है उसमें आई रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम द प्लेसमेंट ऑफिस के देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड आईसेक. उनकी रिक्रूटमेंट चल रही है. आई रैंडमली साइंड अप फॉर इट. A friend of mine did it with me. Sorry, that was for the first time I went to Usugat. It was ISEC in Lahore in Lums. Uh, Everything was operated from Lums. So that was for the first time I went to Lums. सही है एक so before this that one senior told me how this organization works. Then I met a couple of more alumni from ISEC कि अच्छा ये भी ऐसा होता है ये भी ऐसा होता है. They told me कि अच्छा आपको यहाँ पे positions होती हैं. Then there's an executive board. Then there's like TLs or peer members होते हैं. Different departments होते हैं. So this is how everything goes. So मैंने randomly it was not exactly again a random sign up, but I signed up for it or without any thought कि अच्छा होगा नहीं होगा. I gave out that group assessment thing. Then I had my interview. मेरा interview हो गया and luckily I was accepted and then I went for the orientation and today I sit over here talking to you. Okay, wonderful. So, how would you define Isaac or your experience as Isaac to a person who has no idea what Isaac is about? So, like, what would be the blueprint of your journey at Isaac? Yeah, I tell this to everyone. My definition of ISEC is a little different from everybody else's because I define it as a multinational company with every single department. Though it's not a multinational company, it's just an organization, student run organization.
बट उसमें क्या कहते हैं, मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ कि मैंने हर डिपार्टमेंट में, अपार्ट फ्रॉम टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स आई नेवर गॉट इनटू, आई ट्राइड और आई गॉट इनटू एवरी सिंगल डिपार्टमेंट. आई हैड लाइक a couple of weeks or months in every single department, किसी में member, किसी में as a TL. Mostly मेरा time, no doubt, I spent my most of the time in FNL financing, because that was something, वो एक होता है कि आप जब start करते हो ना, तो नॉर्मल एमटीओ प्रोग्राम्स में भी होता है कि आपकी रोटेशन चल रही होती है, और रोटेशन में यू फाइंड दैट वन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट फॉर योरसेल्फ कि अच्छा यार, मुझे ये वाली चीज थोड़ा सा ट्रैक करी और इट्स ऑफ माई इंटरेस्ट, तो मुझे ये इसको परस्यू करना है. फॉर मी इट वाज फाइनेंस एंड लीगल. खैर, डिस्क्राइबिंग माई एक्सप्लेनिंग माई एक्सपीरियंस, इट वाज लाइक के जो चीजें आपको नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में नहीं सीखने को मिलती ना, इवन एक्स्ट्रा करिकुलर डिपार्टमेंट्स भी कुछ यूनिवर्सिटीज के आपको उस एक्सटेंट तक एक्सपोजर नहीं देते प्रैक्टिकल चीजों का, जिस एक्सटेंट तक वी वर और यू गाइस स्टिल आर वर्किंग इन आईसेक, कि यू हैव every single department you can find in any corporate. ठीक है, which includes आपका टीएम, आपका सेल्स में आपकी एक्सचेंजेस आ जाते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग, देन यू हैव मार्केटिंग डिपार्टमेंट, देन यू हैव फाइनेंस डिपार्टमेंट, देन फाइनेंस के अंदर देयर इज लीगल एज वेल. तो मेरा जो ये सारा एक्सपीरियंस है, आई वुड से कि दैट वाज कंप्लीटली प्रैक्टिकल. ठीक है, जो अगेन वही बात कि आपको थ्योरी या एकेडमिक्स में नहीं मिलती. सो या. Okay, so in between all this rotation of TM, TLs of different department, you eventually found that your interest was in FNL. But where did that motivation come from to be the VP for LCVP for FNL? And how hard that experience was? How was the application signing up for process? Like, how was it? यार ओके, जहाँ तक बात है ना मोटिवेशन की, तो दैट्स अ लिटिल फनी पार्ट फॉर मी कि मोस्टली आई गेस मेरे बैच में मैंने काफी लोगों से सुना, नॉट इन आईसेक ओनली, इन यूनिवर्सिटी या वैसे में जनरली मैं अपने जो एजमेट्स थे उनकी बात करता हूँ, मोस्ट ऑफ देम वांटेड टू ऑप्ट फॉर लॉ. सही है, बट अगेन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एक वो है, स्टीरियोटाइप सा है कि हम लोग नहीं लॉ की तरफ बड़े जाने देते, कि इट्स नॉट अ गुड फील्ड, इट्स नॉट कंसिडर्ड अ गुड फील्ड. उसके अंदर मतलब इतना एक्सपोजर एक्सपोजर की बात नहीं, इतना मतलब सीन नहीं है उसके अंदर. सो आई वाज वन ऑफ देम. आई वाज नेवर अलाउड टू गो एंड ऑप्ट फॉर लॉ. So I guess my motivation for finance and legal came out of that, and plus I was working side by side in my own thing. So finance was never a very hard thing for me. So yeah, इस वजह से I tell this to everyone कि you don't have to like have a finance degree in order to go for finance. ठीक है, it's okay, because mostly अगर आपको नहीं भी चीजें पता होती ना, once you start doing them you can learn out of it. It's upon you कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है. So this was my motivation कि मुझे कभी जिंदगी में लॉ भी करना था, and ISEC was that one opportunity for me कि where I could go for legal side and I could do things, I could learn out of it. And lastly, once you thing start doing something that interests you, तो फिर आपकी एक मोटिवेशन बन जाती है कि नहीं यार, मुझे इसमें मैक्सिमम पोजीशन तक जाना है. सही है. सो आई गेस LCVP FNL was that thing for me कि I wanted to achieve that goal, बिकॉज उसके बाद मुझे आइडिया था कि मेरी क्योंकि ग्रेजुएशन भी हो जाएगी एंड आई वोंट बी एबल टू परस्यू आईसेक एनी फर्दर. सो दैट वाज माय लास्ट गोल कि मैं उसको ऑप्ट करूं. एंड जहां तक बात है एप्लीकेशन प्रोसीजर की या प्रोसेस की, सो इट वाज मे बी दैट हार्ड फॉर मी बिकॉज मैंने डिपार्टमेंट्स ही वो चूज किए थे जिनमें मेरा इंटरेस्ट था और जिनके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था. वन वाज टीएम एंड वन वाज एफएनएल. सो and again alumni is, again I'm an alumni right now as well, बट उस वक्त जो सीनियर्स थे या अलमनाई से मेरे ग्रैंड प्रीडिसेसर्स जो थे या ग्रेट ग्रैंड प्रीडिसेसर जो था मेरा, दे हेल्प मी क्वाइट अ लॉट कि किस तरह एप्लीकेशन प्रोसीजर चलता है, आपको इंटरव्यूज में कैसे खुद को हैंडल करना है, क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन किस तरह बनानी है. सो अगेन वही बात कि आईसेक को का जो एक आईसेक बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन और जो उसके अंदर लोग हैं, दे हेल्प यू क्वाइट अ लॉट कि आप किस तरह. एंड अगेन वही बात कि आप
किस तरह नेटवर्क करते हो लोगों के साथ, दैट मैटर्स अ लॉट. सो मेरे लिए कभी भी it wasn't that hard to uh, go through the application procedure या interviews or anything like this because I always had uh, someone guiding me कि किस तरह चीज़ों को लेके चलना है. Okay, so Daniel, you have been an NST, you have been a team leader, you have been LCVP as well, and you have been a FASI for a national conference as well. So, which role at AIESEC do you think has contributed the most towards of like what you are today? Yeah, it's like this. It's a little hard to mention one role okay, that defined or that helped me a lot because for me, again, I would say that every single role was the equal या maybe किसी में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा experience था. But I guess like thinking right now, I guess I would say my first NST role because it was the time when I started working on the national level and फिर उस वक्त आप when I started, I was just in the bubble of Lahore. सही है कि अच्छा लाहौर में ऐसे होता है. We never knew about that much कि अच्छा बाकी LCs में क्या हो रहा है because एक ही कॉन्फ्रेंस अभी तक हुई थी जो इंडक्शन कॉन्फ्रेंस थी that was NYDS 2018. और वही बात कि आप थोड़ा सा लिंक अप करते हो लोगों के साथ, थोड़ा सा नेटवर्किंग होती है, एक्सपोजर मिलता है, बट यू डोंट गो दैट मच इनटू इट. ठीक है, आपको इतना नहीं ज्यादा आइडिया होता कि अच्छा बाकी एलसीज में क्या चल रहा है. बट आई वुड से कि the high part was NST position, which started in Feb 2019. I was NST for legal. So that was, I guess, the position जिसकी वजह से सब कुछ फिर ऊपर जाना शुरू हुआ था. कि when I started working on nationally, I started to interact with the MC, I started to interact with the ECB, I started to interact with the AIESEC in Pakistan's lawyer and everything. That was the time when it all, I would say, started. Perfect. So, Dana, now we have a rapid fire round with us where I will be asking some questions to you, which I have been doing so Should I be lately. worried about that? No, you shouldn't be, I guess. Let's see. Okay. Okay, so first, mention three things that you think that you couldn't have learned without Isaac. How to fill a income tax return, how to get an audit done, uh, how to cater bank needs, Okay, that's a lot of functional or I would say stuff. banking documentation. Okay, Yeah, so that's more again a lot of finance stuff. yes. Okay, so what was the last season or anime or show you watched? यार मुझे Umbrella Academy. I'm currently Okay, watching Umbrella okay. Academy. I have started that too, though. Okay, so which one do you go for? Would you like to go for exchange portfolio or non-exchange portfolio? I guess you have answered that so Non-exchange. far. Yes. Okay, your favorite Isaac chant. My favorite Favorite AIESEC Isaac, chant. yes. यार that's I मुझे भूल गई. AIESEC in कराची की एक chant है. Uh, यार मुझे literally भूल गई है. I know I don't know if you guys have heard it. I हाँ don't. हाँ it's AIESEC in कराची क्या सीन. मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, वो सबको खुद ही समझ आएगा. I Okay, don't want to put in R-rated words. It's not an R-rated word. Khair. okay. That So was that was more of a fun chant, I would say. it's okay. Okay, so which moment from your Isaac life is the one that you want to relive? Mention यार any one of them. NYDS 2019. Okay, so that was a rapid fire round. Okay, one last question, Danya, and that would be a kind of a sum up question. What would be Okay. your advice to the young people, like undergrads Hmm. specifically, who keep coming up with the ideas and are just too scared to take an initiative because they like think that their ideas are not good enough? So, what will you advise to these people, and how can यार Isaac help them? देखो सबसे पहले the thing is कि AIESEC has this very good thing कि जहाँ पे you can easily go to anyone on the top. Nobody minds. Everyone is open to talk to you. सही है.
अब नॉर्मली आई वुड से जितना मैंने बाहर काम किया है या द टाइम आई हैव स्पेंट इन कॉर्पोरेट, वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती. यू कैन नॉट गो easily to your top management. You just are responsible or you are answerable or you can just contact the person right above you, which is mostly, for example, your manager. बट आईसेक में ये चीज़ नहीं होती. सो आईसेक में व्हेन यू थिंक कि आपका क्या कहते हैं, यू हैव एन आइडिया, और या अगर आपको लग रहा है कि आपके पास आइडिया है बट इट इजंट दैट गुड, it's always good to talk to someone maybe from your batch, maybe someone one step upper from you. ठीक है, because until unless you don't talk you won't be able to know कि यार अच्छा बाकी किसी का इसके ऊपर क्या वो है, एक्सप्लेनेशन क्या है, या बाकी किसी की सजेशन क्या है इसके ऊपर कि हाउ हाउ वी कैन गो अबाउट इट. सो ग्रेजुएट्स में या आई वुड से आईसेक में या आपकी जर्नल लाइफ में, yes, it's a little hard out there in the real world. Even in ISEC, I would say it's not कि आप लोग, अगर मैं बिल्कुल उसको शुगर कोट कर दूं कि आप लोग अभी सोचोगे तो जो सोचोगे वो हो जाएगा, वो कहीं भी नहीं होगा. सही, it's like a general life rule. इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च आपकी पूरी होनी चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि देखो आपने एक आइडिया सोचा आज, फॉर एग्जाम्पल मैं आज सोचूंगा कि यार मैं अपने ओन पे कल पानी बनाना शुरू कर दूंगा. इट वोंट वर्क. ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी वाटर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, और मुझे थोड़ा सा उसको सोचने की जरूरत है कि अच्छा अगर मैंने ये सोच लिया अब, तो मुझे अब इस पे रिसर्च चाहिए. सो until unless you don't have your own research, nobody is going to listen to you. कि ऑब्वियसली जब तक आप अगले किसी इंसान को जिसको अपना आइडिया पिच करना, आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर देते ना, कि यार उसके क्वेश्चंस पे सेटिस्फाई नहीं कर देते, तो नथिंग इज गोना वर्क. सो mainly I would say go out for your research, and that's very important. Okay, perfect. So we would be ending our podcast here. Thank you so much, Daniel, for taking our time and for being with us. It was lovely having you. And anything else that you would like to add in the end? uh I won't add anything because I guess yes, I can share my experiences, but that would take quite a lot of time. But I would say learn from learn from others' experiences, yeah, seniors, juniors, anyone, किसी के भी experience, just learn out of it. And more importantly, make your own path. Stop following somebody out there who you have never met, maybe, or maybe you have met. Like just carve your own path. That would be great. So yeah, Exactly. nothing else I would say. Exactly. Everybody has their own journey. So, Yes. on that note, we will be ending our today's episode of Newsfeed. Thank you so much. Thank you. Thank you for having me, Zoha. Have an amazing day. Take care.